some information may not be relevant and some of the information may not be current. So during the session, I will be trying to correct those things, because as sir said, it is in a short notice. So what I would like to do is, the basic I will cover, because the introductory part, like how this Vande Bharat has been made and how it is different from the current trains like LHB coaches which are running on the Indian Railway. It's different. Most of these things may be known to all the participants. I will try to just cover in brief how it is different, what are its main features, and what are its design features. I will slightly cover about the manufacturing, and basically, finally, then I will also take one more presentation on the Vande Bharat sleeper also. So, any doubts are there? You can ask me in between. Basically, it is going to be a semi-technical and semi-type presentation. So basically, the Vande Bharat, I will not take much on this. Now more than 80 trains are running. So this is all like introductory thing, which I will not, I think most of you know. So I will not. So what is Vande Bharat technology? Basically, Vande Bharat platform is a distributed power. I will cover in detail in the next few slides what is distributed power and what is loco hauled, what are the advantages of distributed power. Vande Bharat is also having a different bogie design compared to our existing LHB coaches bogie. Bogie, it is having completely different bogie with which is light in weight and also better ride comfort. This complete train, because it is a train set, it is completely integrated with the vehicle electronics, which will have onboard computers. In all Vande Bharats, there is a cover system, and all toilets are being provided with vacuum evacuation system. So these are the basic, in snapshot, what are the main features of Vande Bharat? Like in Vande Bharat, we have this automatic plug sliding door, which will basically pop out. I mean, when opening, it will pop out and it will slide. So all coaches are provided with automatic sliding doors. All toilets are having vacuum evacuation system. Basically, because in vacuum evacuation system, the water consumption will be less. When you are flushing, when the passenger is flushing, only 0.8 liters of water is used. In general toilet, you will be using 4 to 5 liters. And this is also having a vacuum evacuation system, which will keep the toilets dry and clean. And this is having GPS-based passenger announcement and information system. And is having a complete propulsion system is under the coach. The complete transformer, complete converters are all under the underslung. This is underslung propulsion. And this bogie is a completely newly designed bogie part, and it is having traction motors in alternate coaches. So it is having fully suspended traction motors. So this is I will cover in more detail in the subsequent slides. So this particular slide, which I just want to show, what is the difference between a loco haul and a distributed power train? In loco haul train, we have one loco in the front, and it has to haul the coaches. Like there will be 20 coaches, 24 coaches. So the locomotive has to be heavy. Unless it is heavy, it cannot have the tractive effort to haul all the coaches. Because it is heavy, it cannot have a fast acceleration. It will be sluggish. So here I tried to make a comparison, like a loco haul train is like a elephant is trying to pull a series of carts. Even let us say there are two locos, one loco in the front, one loco in the rear. Definitely it will be faster. But a train set like Vande Bharat, it is like a series of horse carts. Because here we have this, what are black dots are, these are powered axles. Like here in loco, we have 6 axles which are powered. All trailer coaches are unpowered, non-powered. So in Vande Bharat, we have every alternate coach powered. So these black dots are powered axles. So it is like 50% of the coaches are powered. So this will result in faster acceleration, and also the weight will be. So this is like a series of horse carts connected to each other. So this is the main USP of the train set platform. Either let us say we say EMU, MEMU. MEMU also is a distributed power, but the number of powered axles is 25%, means 1/4. EMU, it is 1/3.
In Vande Bharat, this is half. So we have more powering, and because of this more powering, we have better acceleration. At the same time, the axle load, like in Vande Bharat, the axle load means per axle, whatever maximum load is coming is 17 tons, less than 17 tons. In locomotive, it will be like 20 tons. So this is one of the main difference between the loco hauled and Vande Bharat platform, which I want to take some time to explain. Of course, most of you may be aware of this. So basically, because of this type of distribution, will have faster speeds. When the maximum speed is same, Vande Bharat will take lesser time because it will have faster acceleration and a better average speed. So this is the nomenclature and of the Vande Bharat chair car. It is same as sleeper car also. Sleeper car also will have the similar equipment. So basically, that's why I will try to cover this slightly in more detail. So as I said, in Vande Bharat platform, we have every alternate coach as a motor coach. So here motor coach is MC. So MC. And this is 4 car. So there is a 16 car Vande Bharat is the standard train configuration. So we have 4 car into 4. Just a moment, I'll come back. Yeah, good afternoon. Yeah. Yeah. 301, 301. Yeah, sorry, I was having this one. So there here, Vande Bharat is a 16 car train. We have a concept called basic unit. Basic unit is a unit which cannot be separated. So these 4 cars should always be together. So here in this 4 car, we have a driving trailer coach, we have a motor coach, we have a trailer coach TC, and we have again a motor coach. This configuration is same in Vande Bharat sleeper also. So motor coach will have traction motors in the motor in the bogies, and trailer is TC. This having a pantograph. So this small red which we are seeing, this is a pantograph, and the TC coach will have transformer. So from the overhead line of 25 kV, this pantograph draws the power and it will go to the transformer, which will step down to like 1000 volt, 1.1 kilovolt, like that, and it will feed to the traction converters which are available in the motor coach. This traction converter will give power to the traction motors which are in the motor coaches. So one trailer coach with panto and transformer will give power to 2 motor coaches. So unless this all 4 coaches are together, so this cannot work. So that's why this is called a 4 basic unit. So it's called a basic unit. And in a 16 car, we have 4 basic unit. In 20 car, we have 5. In 24 car, we have 6. So this can even work with 2 basic unit, 8 car, 12 car, 16 car, 20 car, 24 car. This is how it can work. So another thing is in Vande Bharat platform, either chair car or sleeper car, we have this fully sealed gangway in between the coaches. So it is completely sealed. I mean, when the passengers are moving from one coach to another coach, they will not feel any major discomfort like what we see in the regular coaches. It is so because it's completely air conditioned. So this also prevents the dust coming from outside, and also there will be a significant noise reduction. That's why we find that in Vande Bharat chair car or sleeper car, we don't have so much of noise even in the outside the air conditioned area also. So this is I will not take much time in this. This is initially in 2016 it was started, in 2019 the train was developed. So very basic things I will try to. This already I explained. This is plug doors are used. I mean the automatic plug doors in Vande Bharat platform. This is the air conditioning ducting inside the coach. How the the air conditioning units, how it is distributed. Vacuum toilets, which I have told earlier. So regarding bogie, actually the bogie part, the bottom bogie part, the wheels and axle part. In Fiat bogie, which is used in LHB, this is a trailer car bogie because locos will have the
traction motors and all. It is just a trailer bogie. It's like a cart. Whereas in Vande Bharat, a new bogie has been developed, which can work as a motor bogie as well as a trailer bogie. So this is the bogie. This is what you see in the bottom is the LHB bogie, and what you see in the top is the Vande Bharat bogie. So in LHB bogie, if you see, there are brake discs. As you know, there are disc brakes. Even in automobile, they use disc brakes. Disc brakes are more effective. In that, it will stop faster. Brake force will be higher. So here in the LHB bogie, our regular coaches, we have this yellow item. This is called brake disc, which is mounted on the axle. Whereas in Vande Bharat, we have to fix traction motors in the bogie itself because we are having powered wheels. So these brake discs are fitted on the axles, on the both side of the axle. So this is screwed onto the axle. So this is the wheel mounted brake disc, and the brake calipers are mounted on the bogie frame like this. So this traction motor, another feature is there in locomotive and all. If you have an idea, in locomotive the traction motor is fixed at 2 points, one on the axle and another on the bogie frame. This is called axle hung, no suspension. Whereas here in Vande Bharat, if you see, the axle doesn't have any traction motor resting on it. It is completely fixed to the bogie frame. The advantage of this is unsprung mass. What we call unsprung mass is whichever is supported by spring is called sprung mass, which is directly on the axle is called unsprung mass. If unsprung mass is more, the ride will be uncomfortable. So this fully suspended traction motor will help in better ride. So this is the main, overall broadly the difference between LHB bogie and Vande Bharat bogie. Of course, this is all the analysis part. This is how the bogie looks Vande Bharat bogie. This is a trailer bogie, and we can see that the brake disc is mounted on the wheel disc here, both sides, and we have air spring in the secondary suspension. Another feature which I want to explain, which is common for any Vande Bharat platform, is the brake system. In regular LHB coaches, what happens is we have a compressor in the loco, and what happens, a complete brake pipeline runs from the loco to the last coach. When the driver wants to apply brake, he operates the brake lever, the brake pipe pressure will get destroyed. Means there will be 5 kg per centimeter square pressure, it will be destroyed. So that communication goes via mechanical mode. मतलब अभी मतलब जैसा ब्रेक प्रेशर कम हो गया, ये सिग्नल एक एक कोच में जाते जाते 24 कोच तक पहुंचने में उसको 15 से लेके 20 सेकंड लग सकता है, इसलिए थोड़ा ब्रेक जो है इट विल टेक्स मोर टाइम. अब वंदे भारत टाइप प्लेटफॉर्म में क्या है कि इट इज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक. जैसे ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करना चाहता है, व्हेन ही अप्लाइज द ब्रेक, communication goes electronically to every coach, and every coach has a brake electronic unit, control unit, computer is there. वो कैलकुलेट करता है कि कितना ब्रेक प्रेशर अप्लाई करना है, and it will generate that from the MR pressure directly into brake cylinder pressure. इसलिए क्या ब्रेक कम्युनिकेशन फास्टर है. Another thing is वंदे भारत में आपको this is how below the underframe ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, ये सब बिलो द अंडरफ्रेम माउंटेड है वंदे भारत में. जैसे लोको में तो सब ऊपर रहता है, इस पे कई कंपोनेंट अंडरस्लंग है, तो इसलिए ऑन बोर्ड पूरा स्पेस पैसेंजर्स के लिए. दिस इज द टीसी कोच में पैंटोग्राफ इस टाइप से लगा रहता है. ये कार बॉडी जो स्केलेटन है, मतलब वंदे भारत कोच के जो स्केलेटन है, बेसिकली द मेटालिक पार्ट, इसको हम लोग कार बॉडी बोलते हैं. दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड दीज आर ऑल द फिक्सचर्स. जैसे ये फिक्सचर है अंडरफ्रेम मतलब चेसिस बनाने के लिए इस टाइप से फिक्सचर रहता है. इसमें अंडरफ्रेम को फैब्रिकेट करते हैं, फिर साइड वॉल अलग से फैब्रिकेट होता है. दिस ऑल विल इंटीग्रेटेड है फिक्सचर कॉल्ड बॉडी असेंबली फिक्सचर. तो ये जैसे मतलब फ्रंट डीटीसी कोच है, ये इनसाइड मेटालिक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो एफआरपी नोज कोन जो दिखता है, that is mounted. ड्राइविंग कोच का कैब है. दिस इज बोगी. So this is in this metallic structure, this front nose cone cover is provided.
ये सब इंटीरियर्स का पहले जो फर्स्ट रेक में जो कॉन्सेप्ट्स है उस समय कई कॉन्सेप्ट्स एवेल्युएट किया है. फाइनली दिस वाज द इनिशियल रेक व्हिच वाज मैन्युफैक्चर्ड. So this all validation जो डिजाइन पार्ट है इसमें मैं आई थिंक आई विल नॉट टेक, मतलब आई जस्ट गो थ्रू. ये मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जो फ्रंट नोज कोन है ये इस टाइप से बना रहता है. मतलब ये जो मेटालिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको दिखाया था इसके ऊपर ये जो एफआरपी का पोर्शन फिक्स होता है. इस शेप से एरोडायनेमिक फोर्स, मतलब व्हेन द ट्रेन ट्रेवल्स लॉट ऑफ एरोडायनेमिक फोर्स कम्स इनटू 120 kmph. बिकॉज ऑफ दिस शेप द एरोडायनेमिक फोर्स इज रिड्यूस्ड. वो ड्रैग जो है रिड्यूस होता है. ये कार बॉडी जो फिक्स, मतलब कार बॉडी में असेंबल करने के बाद मतलब हाउ इट इज लिफ्टेड आउट. So that is very brief about the वंदे भारत प्लेटफॉर्म. अभी क्या वंदे भारत स्लीप, वंदे भारत का और भी वर्जन है जो नमो भारत रैपिड रेल अभी जो 2 जगह पे चल रहा है. बिहार में चल रहा है एक, और एक वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल में चल रहा है. दैट इज नमो भारत रैपिड रेल. वो सिमिलर टू वंदे भारत है बट ओनली उसमें डिफरेंस क्या है कि इट इज लाइक ए इंटर, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल अनरिजर्व्ड है, फुल्ली एयर कंडीशन. डोर्स अभी इसमें जैसे 4 डोर है उसमें भी 4 डोर है बट डोर्स है डबल डबल लीफ डोर्स है. इसमें सिंगल लीफ डोर है, उसमें डबल लीफ डोर है. एक वंदे भारत स्लीपर है उसके बारे में मैं अलग से एक पीपीटी आई विल शो यू. एंड फ्रेट ईएमयू एक और वर्जन है जो वंदे भारत वर्जन में सेम वंदे भारत प्लेटफॉर्म को यूज करके विद द सेम लाइक 50% पावरिंग सिमिलर बोगीज we have made a train which can transport parcel. So this train can transport the parcel at like a Rajdhani train. It can go at an average speed of 80 kmph, 85 kmph, and can do parcel movement between major cities. This train also now manufactured. And Vande Bharat sleeper is this is the Namo Bharat rapid rail जो मैं कह रहा था. This is the Namo Bharat rapid rail. It is similar to Vande Bharat. इसमें जैसे वंदे भारत में every passengers have a separate seat, इसके bench type seats है. और जैसे मेट्रोस में देखते हैं रूट मैप इंडिकेटर. और जो सिंगल डोर है वंदे भारत में इसमें डबल लीफ डोर है. और इंटीरियर्स कुछ इस टाइप से है कि हैंड होल्ड्स है, मतलब पीपल हु आर स्टैंडिंग उनके लिए है. और फुल्ली सील्ड गैंगवेज जो सिमिलर टू वंदे भारत चेयर कार. ये इस टाइप से ट्रेन अभी 2 चल रहे हैं. तो रिगार्डिंग वंदे भारत चेयर स्लीपर कार, तो वंदे भारत स्लीपर कार की कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से है. मतलब we have total 16 cars and we have like same 8 motor coaches and we have 3 tier 2 tier first AC. and मतलब एक एक कोच का मतलब नंबर ऑफ बर्थ इस एनडीटीसी फर्स्ट एसी इसमें 24 बर्थ है जो सिमिलर टू हमारा एग्जिस्टिंग एलएचबी है. और 2 टायर कोचेस 48, 2 टायर कोचेस एमसी में भी 48 है. और डीटीसी जो ड्राइविंग कार में 28 पैसेंजर कैपेसिटी है. और मोटर 3 टायर कोचेस है टोटल. मतलब टोटल देर आर 11 coaches which are 3 tier, 4 coaches which are 2 tier, and 1 coach which is first AC. So total in a 16 car train we have 823 passengers. And toilets also, like in some coaches there are 4 toilets, some coaches there are 3 toilets because passenger as a capacity कम है तो toilets 3 are there. So total there are 52 toilets and 823 passengers. And इसमें pantry space भी सेपरेट पैंट्री कोच नहीं है इसमें. और लिनन स्पेस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है हर कोच में. लिनन मतलब जो पैसेंजर का लिनन स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड है. और पैंट्री स्पेस भी इट इज इन डिफरेंट अल्टरनेट कोचेस. इस टाइप से मतलब पूरा ट्रेन जो है ये कंप्लीटली ट्रेन सेट है. एंड दिस इस टाइप से पैसेंजर कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस इज द वंदे भारत स्लीपर जो अभी चल रहा है. जो इसका मेन फीचर्स है वो मोर और लेस लाइक वंदे भारत चेयर कार है एक्सेप्ट दैट इट इज स्लीपर कार. इसके अलावा कुछ सेफ्टी फीचर्स है जो चेयर कार में नहीं है. जैसे क्रैश वर्दीनेस, मतलब जैसे स्लीपर में आई विल शो यू इन द
next slides, it has a feature called uh, crash worthiness design. But in case of crash, the extent of damage to the train is minimized in this design. I will explain वो कैसे होता है आगे this one. All other things are more or less like वंदे भारत चेयर कार जो मैंने पहले आपको बताया था. और इसके अलावा जो स्लीपर कार में we have taken more noise insulation measures because sleeper car it has supposed to be more noise free compared to chair car. The noise insulation used is of superior grade and so that the interior is much more comfortable. And also जो interior side chair car में sleeper car में because sleeper car is a night train, fire safety is much more important. So इसका जो interior side जैसे panels हो गया, seat and berth हो गया, these all are higher grade. EN 455 is the fire standard. मतलब HL3 मतलब 1000 level 3. मतलब it is the stringent fire standard specification for rolling stock. ये फीचर अभी जो है मतलब ये इंटीरियर्स विद EN 455 HL3 आर बीइंग यूज्ड इन स्लीपर कार. तो बाकी जैसे फायर डिटेक्शन सिस्टम, CCTV सर्वेलेंस, फर्स्ट एसी में शावर विद एंड फायर बैरियर डोर्स, मतलब एवरी कोच दे हैव फायर बैरियर डोर्स एट द एंड वॉल. ये सब फीचर जो है these are provided in addition to the Vande Bharat chair car. And for the attendants, there are separate berths which are given. जो 823 passengers है, उसके अलावा because हमेशा हम लोग जनरली देखते हैं कि attendant is generally sleeping in the doorway. So for the attendant, चौदह को आगे कर 15 को कर दूंगा. ठीक है, 15 तक तो जाता है, 15 को सर. yeah. Shall I proceed? सर हाँ yeah. तो इसमें attendant berths are separate, 38 numbers separate attendant berth दिया गया, which are for the attendants. So some features which will again I will try. These are the interiors. जैसे 3 tier है. This is Vande Bharat sleeper car 3 tier. Basically this is about the interior. जो interior upholstery जो interior because fire safety is very important. इसमें ये ध्यान रखा गया कि जो भी items interior यूज कर रहे हैं, so they are all fire rated, HL3 rated. एंड जो पार्टीशंस है, these are all like aluminum honeycomb. These are the partitions जो दोनों मतलब जो कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करते हैं. These are the partition, the dot pattern. These are aluminum honeycomb. Aluminum honeycomb means it will be having honeycomb core and top and bottom there will be aluminum sheet. So because of this, it will be lighter. And snack tables are provided, and ladder also is different. And so mobile holders have been provided for each passenger. This is a made of silicone rubber. And dustbin compactor provided गया pantry area में, so that मतलब dust जो what the compactor does is जैसे dustbin भर जाता है, it will apply force and compact it. So इससे चलते जो भी dust generation है, it can be handled better. Waste management will be better. So I was telling about one feature about sleeper car, that is the crash. Crash मतलब during any accident or any untoward incident, generally क्या है कि there will be lot of energy generation. मतलब दो ट्रेन या ट्रेन किसी चीज से टकराता है, उस दौरान जो एनर्जी उत्पन्न होता है, that if that is absorbed properly, extent of damage will be lesser. So to do this in Vande Bharat sleeper, we are having crash buffers. These are called crash buffers. ये जो आपको दिख रहा है, these are crash buffers जो स्लीपर में भी लगा हुआ है. एंड आप यहाँ पे देखेंगे, these are like anti climbers बोलते हैं. Basically they are like fingers. During collision, these things will get interlocked and it will not allow the coaches to override on one another.
ये एंटी क्लैम्बर ये काम करता है। और दूसरा काम करता है कि ये जो पिस्टन लगा हुआ है, जो सिलेंडर दिख रहा है, ये जो है इट विल गेट क्रश होके इट विल अब्सॉर्ब एनर्जी। एंड ऑल्सो कपलर में ये जो कपलर दिख रहा है, ये कपलर में भी इस टाइप से क्रैश ट्यूब है। तो बेसिकली ड्यूरिंग कोलिजन this will get compressed and during that movement it will absorb the crash energy। मतलब जो भी क्रैश में जो एनर्जी उत्पन्न होता है, दिस एनर्जी अकॉर्डिंगली क्या होगा ड्यूरिंग कोलिजन, दिस एनर्जी मतलब अगर ये अब्जॉर्व नहीं करता, ये एनर्जी विल गो टू द कार बॉडी, मतलब इट विल रिजल्ट इन फेटालिटीज। सो बिकॉज ऑफ दिस क्रैश एलिमेंट्स, ये मतलब ड्यूरिंग दिस अनटुवर्ड इंसिडेंट्स, मतलब द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कैन कम डाउन। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ वंदे भारत स्लीपर, जो चेयर कार में नहीं है। बाकी जो इसका नोस्कोन जो है डिफरेंटली शेप्ड है, ताकि ड्यूरिंग कैटल रन ओवर वगैरह में इसका डैमेज जो थोड़ा कम हो। और दूसरा तो वंदे भारत चेयर कार में इस टाइप से डोर्स नहीं है, जो एंड वॉल में इस टाइप से फायर बैरियर डोर लगा हुआ है। ये इसलिए लगा है कि ड्यूरिंग एनी फायर एक्सीडेंट और अनटुवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, दिस कैन बी इलेक्ट्रिकली क्लोज। और 100 डिग्रीज के बाद ये डोर जो है लॉक हो जाता है, ताकि ये कोच से फायर जो है दूसरे कोच में ना पहुंचे। दिस इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ फायर सेफ्टी। तो बेसिकली फ्राइट ईएमयू के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, बस आई विल जस्ट शो कि दिस इज द फ्राइट ईएमयू जो वंदे भारत प्लेटफॉर्म में ही है। इनसाइड जैसे इस टाइप से रोलर बेड लगा हुआ है, दिस टाइप से बड़ा डोर्स है, साइड डोर्स विच आर ऑटोमेटिक डोर्स। ये फ्रेट ईएमयू में मतलब वी कैन लोड एटलीस्ट 24 टन्स इन ईच कोच and it will have a faster acceleration and it can achieve 130 kmph and can move the parcel faster। ये ट्रेन अभी एक बन गया है which is I mean going to service in shortly। इसके अलावा जस्ट आई वांट टू शो वन और टू meanwhile outside, so I will ask the forum to, मतलब basically I try to talk in very brief about Vande Bharat chair car। Sleeper car also I will try to show few more slides। Meanwhile I will request अगर participants का कोई doubts है which they would like to ask। सर एक क्वेश्चन है, ये टेक्नोलॉजी वाइज 3 फेज मेमो अंडरस्टैंड और वंदे भारत में मतलब कोई मेजर डिफरेंस? वंदे भारत और 3 फेज मेमो अंडरस्लंग, यस हाँ बेसिकली मेमो अंडरस्लंग क्या है कि इट इज हैविंग 25% पावरिंग, मतलब उसमें 2 मोटर कोच है और 6 ट्रेलर कोच। apart from capacity, in fact capacity of Vande Bharat is much more, but otherwise technologically any difference like मतलब टेक्नोलॉजिकली लाइक जैसे ब्रेक सिस्टम अलग हो गया, जैसे वंदे भारत का ब्रेक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिकल ब्रेक सिस्टम है, मेमो अंडरस्लंग में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग है बट सेपरेट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स एयर कंडीशनिंग और एयर कंडीशन और कैपेसिटी, मेनली यही डिफरेंस है, मतलब इंटीरियर्स अलग है बट एज ए कॉन्सेप्ट वो भी अंडरस्लंग में जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह अंडरस्लंग है, जैसे पैंटोग्राफ वगैरह सब डीएमसी में रहता है उसमें। आरटीसी में दे दिया है, मतलब वंदे भारत में इतना इतना तो फर्क है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज हाँ टेक्नोलॉजी वाइज सेम है। दूसरा ये है कि जैसे उसका जो बोगी है वो 20 टन का एक्सेल लोड है, स्टैंडीज भी काफी रहते हैं। जैसे वंदे भारत का 17 टन का बोगी है, बोगी भी लाइटर है, कार बॉडी भी लाइटर है, मतलब ब्रॉडली ये डिफरेंसेस है। तो स्लीपर कार के बारे में आई विल ट्राई टू कवर। मेरा स्क्रीन विजिबल है? तो
क्रैश वर्दी के बारे में बताया मैंने। मैं एक्चुअली कुछ लेआउट्स दिखाता हूँ, जैसे स्लीपर कार में किस टाइप से लेआउट्स है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैसा है स्लीपर। जैसे ये है एमसी 3 टायर। एमसी 3 टायर जैसे 16 कार की गाड़ी में 5 इस टाइप से गाड़ी है, मतलब 5 एमसी 3 टायर है। वो 3 टायर कोचेस है। टोटल 67 का पैसेंजर कैपेसिटी एंड टॉयलेट्स इस टाइप से 1 2 3 4 टॉयलेट्स। A separate electrical cubicle is there, मतलब because it is a वंदे भारत टाइप ट्रेन। एंड यहाँ पे लिनन रूम कम अटेंडेंट बर्थ इस टाइप यहाँ पे लगा हुआ है। ये एमसी 3 टायर है एंड ये टीसी 3 टायर है। टीसी 3 टायर में आप देखेंगे यहाँ पे, बिकॉज इस एरिया में पैंटोग्राफ आता है, यहाँ पे जो है वी हैव ए स्पेस फॉर पैंट्री। इस टाइप से कोच 4 है रेक में। इस चारों में पैंट्री का स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे हीटिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं एंड स्टाफ के लिए अलग से 3 बर्थ दिया हुआ है। ये पैंट्री स्टोरेज है। एंड ये जो पैंटोग्राफ जहाँ पे आता है वहाँ पे 2 ही बर्थ है, बाकी सब 3 बर्थ है। ये 3 टायर है और लिनन रूम का अटेंडेंट यहाँ पे है और वी हैव 3 टॉयलेट्स। ये टीसी 3 टायर है। ये ड्राइविंग कोच है जिसमें मतलब एक अलग से पीआरएम टॉयलेट है। पीआरएम भी इसके लिए मीन्स पैसेंजर विथ रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, और उनके लिए अलग से बर्थ दिया हुआ है ताकि उनको व्हील चेयर रखने का सुविधा है, और थोड़े थोड़े स्पेस भी दिया हुआ है। ये एमसी 2 टायर है। एक्चुअली वंदे भारत प्लेटफॉर्म में क्या है कि देर विल बी एमसी, एवरी अल्टरनेट कोच में एमसी है, मोटर कोच है, तो उसमें एमसी 3 टायर, एमसी 2 टायर इस टाइप से वेरिएंट्स मतलब रहता है। सो दिस इज एमसी 2 टायर। यहाँ पे एक पैंट्री स्पेस दिया हुआ है अलग से और 3 टॉयलेट्स है एंड सब 2 बर्तर है। तो लिनन रूम के अटेंडेंट बर्थ यहाँ पे लास्ट में है। एमसी 2 टायर है। और एक एनडीटीसी है जो बेसिकली, एनडीटीसी मतलब नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार। इट इज लाइक ए ड्राइविंग ट्रेलर कार ओनली। मतलब दिस इज वन वन ये रेक में एक कोच है 16 कार में, उसमें एक पैंट्री भी दिया हुआ है, मीडियम पैंट्री, एंड टॉयलेट्स 3 है एंड कैपेसिटी 44 है। और एक एनडीटीसी फर्स्ट एसी है, एक शावर कम टॉयलेट दिया हुआ है इसमें, एंड टॉयलेट्स सेपरेटली 2 टॉयलेट्स है, टोटल 3 टॉयलेट्स है एंड दिस इज द पैसेंजर कैपेसिटी 24। ये एनडीटीसी फर्स्ट एसी है। ये बेसिकली ये दिखाता है कि कितने टॉयलेट्स है, कितने स्टाफ, मतलब टोटल स्टाफ 38 के लिए स्टाफ के लिए बर्थ दिया हुआ है, और पैंट्री किस किस में लगा हुआ है जस्ट इंडिकेट करता है ये, मतलब ये पर्टिकुलर स्लाइड। और किस टाइप से 3 टायर 2 टायर फर्स्ट एसी ये सब लगा हुआ है। इंटीरियर फीचर्स मैंने मतलब मोस्टली कवर कर दिया है, बट थोड़ा इसका बर्थ कंस्ट्रक्शन देखेंगे थोड़ा अलग है। ये अल्यूमिनियम एक्सट्रूजन से बना है, जो बेसिकली हमारा रेगुलर कोचेस पे बर्थ जो है माइल स्टील का बना रहता है फ्रेमवर्क। इसमें हनीकॉम्ब और अल्यूमिनियम एक्सट्रूजन और डाइकास्ट पार्ट से बना है, तो देखने में भी अच्छा है एंड मेंटेनेंस आल्सो विल बी बेटर, आई मीन ईजियर। और ये जो बर्थ का जो कुशन है वो अलग से हम लोग निकाल सकते हैं, पूरा बर्थ निकालने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग मेंटेनेंस। ये मॉडुलर टाइप कॉन्सेप्ट है। और ये लैडर भी हनीकॉम्ब से बना है ताकि इट विल बी लाइट, देखने में भी अच्छा रहे। इस टाइप से जो रीडिंग लाइट कम मोबाइल चार्जिंग सॉकेट प्लस लैपटॉप चार्जिंग पूरा इंटीग्रेटेड इस टाइप से असेंबली दिया है, और ये हर पैसेंजर को दिया गया है सेपरेटली। और ये ऑटोमेटिक आईसी डोर है, जो हम लोग एसी पोर्शन से नॉन एसी एरिया में जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक डोर है, मतलब इसमें आईआर सेंसर लगा हुआ है, बिना टच मतलब जस्ट हाथ दिखाएंगे तो इट विल ओपन ऑटोमेटिकली, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट ऑटोमेटिक डोर। ये दिखाता है कि एयर कंडीशनिंग, इसमें क्या है कि एयर कंडीशनिंग का जो कंडीशन एयर है वो नॉट ओनली इन पैसेंजर स्पेस, इवन पैंट्री एरिया में भी दिया है यहाँ पे, और टॉयलेट के पास भी दिया है, ताकि जो है मतलब टोटल एरिया में भी टेम्परेचर कंट्रोल रहे। मतलब जैसे हम लोग रेगुलर कोच में देखते हैं, ये जो टॉयलेट एरिया में एयर कंडीशन एयर ज़्यादा आता नहीं। और ये बेसिकली ये दिखाता है कि जो मतलब हम लोग जो सिमुलेशन कैरी करते हैं कि एयर कंडीशन जो एयर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरह से जा रहा है, ये सब हम लोग डिजाइन स्टेज में करते हैं टू एंश्योर कि पैसेंजर के लिए प्रॉपर कंडीशन एयर आ रहा है, मतलब जस्ट टू शो कि मतलब बैकग्राउंड कैसे हम लोग करते हैं। दिस इज डन यूजिंग सीएफडी सॉफ्टवेयर। और ये टॉयलेट है जो मतलब वेस्टर्न स्टाइल और इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, मतलब
थोड़ा इसको इस टाइप से लुक है ताकि इट इज लाइक मोर लाइक ए मॉड्यूलर एंड एयरक्राफ्ट। और पैंट्री भी हमने अलग अलग पैंट्री भी दिया हुआ है। क्रैश वर्दी मैंने आपको बताया था, जो फ्रंट में भी जैसे क्रैश बफर्स है, ड्यूरिंग क्रैश इट विल अब्सॉर्ब द एनर्जी। कोच के बीच में भी क्रैश कपलर्स है। ये बेसिकली क्रैश सिमुलेशन जो कंप्यूटर में सिमुलेशन करते करके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कोचेस बिहेव करते हैं। ये कोई क्रैश क्रैश रिलेटेड एलिमेंट्स। मतलब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे वंदे भारत चेकर और स्लीपर कार में कपलर इस टाइप से है, मतलब ये ट्यूब है। जैसे हम लोग सीबीसी देखते हैं, फ्रंट में सीबीसी है, दिस इज सीबीसी जो हम लोग सब एलएचबी कोच में देखते हैं। इसमें सेमी परमानेंट कपलर लगा रहता है। बेसिकली इट विल हैव ए मफ जॉइंट, तो दिस इज बोल्टेड जॉइंट। सो इस टाइम इसमें क्या एडवांटेज क्या है कि एक तो मतलब वेट कम है, और दूसरा जर्क्स का प्रॉब्लम जो हम लोग रेगुलरली फेस करते हैं वो कम होता है। मतलब बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल होता नहीं है। दो एडवांटेजेस है वंदे भारत प्लेटफॉर्म में, बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर। ऐसा नहीं कि एक ही साइड से जो है लोग को खींच रहा है, एवरी अल्टरनेट कोच खींच रहा है, तो ऐसे ही जर्क कम रहता है। और कपलर से जो है और जर्क का प्रॉब्लम और कम हो जाता है। बोगी के बारे में मैंने जो ऑलरेडी बताया है कि मतलब जैसे चेक कार और स्लीपर कार में मोरल सिमिलर बोगी है। ब्रेक सिस्टम के बारे में भी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक एंड व्हील डिस्क माउंटेड ब्रेक डिस्क है। गैंगवेज, यस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। इस टाइप से है गैंगवे जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब थोड़ा सीजर मैकेनिज्म, कंप्लीट इंटर में भी इंटीरियर में भी कवर्ड है। बॉटम फ्लोरिंग में देयर इज सीजर मैकेनिज्म, मतलब इस टाइप से सीजर जो आई होप यहाँ पे दिख रहा है आपको सीजर, मतलब बिकॉज कोच जैसे एक दूसरे मूव होते रहता है, इट हैज टू टेक केयर ऑफ दैट कर्वेचर। सो ये पूरा मैकेनिज्म जो है फुल्ली सील गैंगवे में रहता है, कोच दो कोच के बीच में। प्लग डोर, ये चेयर का टाइप ही है प्लग डोर। ये सब जो है मतलब नट्स एंड बोल्ट्स के बारे में है कि कैसे हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं विद रेस्पेक्ट टू सेफ्टी। मैं ऐसा मतलब आई एम जस्ट स्किपिंग, जो मैं ऑलरेडी बता दिया, मैं ज़्यादा मतलब वहाँ रोक नहीं रहा हूँ। फायर बैरियर डोर जो मैंने ऑलरेडी बताया, और एक फायर डिटेक्शन सिस्टम है, ये चेयर कार में भी लगा हुआ है, स्लीपर कार में भी लगा हुआ है, एलएचबी कोचेस में भी लगा हुआ है। ये ईयरली स्मोक डिटेक्शन सिस्टम है। ये क्या करता है कि एयर की सैंपल जो है रेगुलरली इसको मॉनिटर करते रहता है। अगर स्मोक इफ इट सेंसेस द स्मोक, ये अलर्ट देना शुरू करता है, मतलब फायर, मतलब स्मोक है, फायर है करके। तो बेसिकली ब्रॉडली मैंने मतलब इन ब्रॉड मैंने आई ट्राई टू कवर अबाउट द वंदे भारत स्लीपर एंड चेयर कार। ऐसे वंदे भारत प्लेटफॉर्म बेसिक डिफरेंस क्या है, और मतलब व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलएचबी कोच, जैसे बोगी हाउ इट इज डिफरेंट, एज ए प्रोपल्शन कॉन्सेप्ट लोको हॉल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में क्या मेजर अंतर है, वेरी बेसिकली ट्राई टू कवर। और स्लीपर कार के बारे में भी आई गिवन लाइक स्लाइटली डिटेल्स। जैसा और नमो भारत है, फ्रेट ईएमयू है, वो भी मैंने थोड़ा कवर किया है, जैसे वंदे भारत की फैमिली के बारे में थोड़ा। इसके अलावा भी आईसीएफ इज आल्सो वर्किंग ऑन अलॉन्ग विद बीएमएल ऑन हाई स्पीड ट्रेन जो 280 kmph का स्पीड से चलेगा, वो स्टैंडर्ड गेज का